To the world, you may be just a teacher. To the world, you may be just a teacher. But to your students, you are a hero, Mr. Birju Patel, sir. Give a big round of applause for Mr. Birju Patel, sir. I would like to extend my deepest gratitude to the management of Royal International School for giving me the opportunity to lead this workshop. Your commitment to the growth and the development of your students is really commendable. And a special thank you to Al Muhammad sir, Aslam Patel sir, Baswara sir. You helped a lot. And today I am standing here not just as a trainer, but a witness to transformation, a witness to courage, and a witness the young voices that were once silent and now rising with confidence and clarity. Imagine a world where girls are not allowed to go to school, where their dreams are ignored and their talent are wasted. Sadly, this is not just imagination. In many places, girls are still denied the right to learn just because they are girls. Confidence is believing in yourself. It is about trusting that you can do something even when it feels hard or scary. But confidence does not mean we will never fail. It means we will not give up even if we fail. Think about our mothers, sisters and friends. What if they never went to school? Who would become our teachers, doctors and engineers? Educating girls does not just change their lives. It changes entire families, communities and nations. I remember once feeling scared to speak in front of class. I thought, what if I make a mistake? What if they laugh at me? But then I realized everyone makes mistake. It is okay. So I gathered courage and spoke. I did make mistakes, but I also learned and become better. और एक क्वालिटी और है, वो जादू है क्या मुझे नहीं पता. मेरे स्टूडेंट्स जो वर्कशॉप करते हैं, जो फोकस्ड स्टूडेंट रहते हैं, वो ऑटोमेटिकली मैथ्स में भी अच्छे हो जाते हैं, साइंस में भी अच्छे हो जाते हैं, बाकी अदर सब्जेक्ट में अच्छे हो जाते हैं और उनकी पर्सनैलिटी अलग लोग दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग हो जाती है. ये मुझे नहीं पता कि कैसे होता है. ये सिर्फ एक महीने की ट्रेनिंग में आने के बाद बच्चों का क्या होता है, ये पढ़ाता हूं मैं लैंग्वेज, प्रोनाउंसिएशन, पब्लिक स्पीकिंग, ये सारी चीजें, लेकिन असर बाकी सब्जेक्ट में भी होता है. वो साइंस में भी अच्छा करते हैं, मैथ्स में भी अच्छा करते हैं और तमाम और सब्जेक्ट में अच्छा करते हैं. वो शायद इसलिए होता है क्योंकि अंदर कुछ क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाती है कि आप कुछ करना है, आपको सीखना है. अगर हम इसमें कर सकते हैं तो बाकी सब्जेक्ट में क्यों नहीं कर सकते. तो इस तरीके से एक बर्निंग डिजायर उनके अंदर डेवलप होती है. तो सर अभी आपने एक बात कही अपनी स्पीच में कि आप सिर्फ उनको कम्युनिकेशन स्किल पढ़ा रहे हो. तो कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ बच्चा सिर्फ एक सब्जेक्ट में डेवलप नहीं हो रहा है, बल्कि ओवरऑल सब्जेक्ट में डेवलप हो रहा है. एक जीती छात्र की मिसाल मेरा एक बेटा है. तो मुझे लगा था कि शायद एग्जाम के टाइम पे रिजल्ट कम होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है. जो बच्चे वर्कशॉप में अटेंड किए थे, जो स्टडीज में वीक थे, वो सभी बच्चों ने एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है. तो डेफिनेटली सर सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, बल्कि सभी सब्जेक्ट में बच्चे डेवलप हुए हैं. और इन फ्यूचर आप प्लीज ट्राई करें कि दोबारा आप हमारे स्कूल में आए. थैंक यू सो मच. 1 month ago, you began this journey not just to learn pronunciation, public speaking skills, or grammar, but to discover yourself, to unlock the potential that was hidden beneath hesitation and fear. And now I see that transformation in your eyes, in your voice, in your posture, in your gesture. That was really very fantastic journey. And my dear friends and students, what a journey it was. From hesitant introduction to confident speeches, from avoiding the stage to owning it,
I look at you today not just as a student. I see you as a future leaders, innovators, and change makers. But let me tell you, this is not the end. This is only the beginning. This workshop was just a spark, and now it is your job to keep the fire alive. Keep learning, keep speaking, and keep shining in the world as well.